हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे है। मेरे घर में काम चल रहा है एंड आई डोंट नो अगर रेनोवेशन व्लॉग इससे पहले अपलोड होगा कि इसके बाद, बट या माय हाउस इज़ गेटिंग रेनोवेटेड। दिवाली के पहले यस बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक टाइम चल रहा है लाइक आई सेड। सो अभी मुझे थोड़ा पीस एंड क्वाइट मिला है बिकॉज जो वर्कर्स है वो गए हैं लंच करने। सो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग कर लूँ क्योंकि आज मुझे एक्चुअली थोड़ा शॉपिंग करने जाना है, लाइक दिवाली शॉपिंग। यू गाइस नो कि मैं दिवाली सीरीज़ कर रही हूँ अपने चैनल पे, विच आई स्टिल हैव टू वर्क ऑन। लाइक आई फिल्म्ड 1 or 2 वीडियोज़ बट आई हैव टू डू मोर एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई रेनोवेशन ओनली, क्योंकि रेनोवेशन जैसे ही होगा आई विल सेट अप माई न्यू बैकग्राउंड एंड मैं उसी के अगेंस्ट ही फिल्म करना चाहती थी। बट लाइक आई सेड टुडे आई हैव सम शॉपिंग टू डू, आई हैव सम प्लांटर्स टू बाय। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि पीछे मैं प्लांट लगाऊँ एंड थोड़ा अपने बैकग्राउंड को स्विच अप करूँ बिकॉज यू गाइज आर सुपर बोर्ड ऑफ माई पेंटिंग्स से पिक्चर्स, जो मेरी पिक्चर्स है। ऑल्दो आई रियली लव दैम बट या यू गाइज वांट कि मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूँ। आई एम गोना मूव द फ्रेम्स, आई विल टेल यू गाइज व्हाट एग्जैक्टली आई एम प्लानिंग टू डू। बट अदर देन दैट हाँ, मुझे सामान खरीदना है। आई हैव टू बाय अ स्टूल, आई हैव टू बाय अ कैंडल होल्डर बिकॉज बेस्टी सेंड सम कैंडल्स। वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी बिकॉज आई हैव अदर वीडियोज़ दैट आई एम प्लानिंग टू फिल्म। मुझे अदिति ने बोला कि वेस्ट साइड में बहुत अच्छे प्लांटर्स मिलते हैं, सो आई वांट बाय अ क्यूट प्लांटर। उसने भी मुझे एक प्लांटर गिफ्ट किया है बट या आई एम गोना बाय दैट एंड देन आई विल सी अगर मुझे कुछ निकनैक्स मिलते हैं मेरे बैकग्राउंड में रखने के लिए दैट विल लुक क्यूट। मुझे थोड़ा क्लीन बैकग्राउंड ही पसंद है, सो आई जस्ट वांट 1 or 2 थिंग्स जो मैं थोड़ा लगा दूंगी तो अच्छा लगेगा। बट हाँ, मोस्टली मेरे घर में टाइल्स लग गई है, अभी थोड़ी और ऑब्वियसली लगने ही बाकी है। मेरे रूम में अभी तक नहीं लगी है, मेरे रूम में कल लगेगी। सो या इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग अभी, but nothing can be done. See, there are so many boxes everywhere. We have barely any space to sit. And अभी मैं ऐसे piles of I don't know what are these cushions के ऊपर बैठ के ही कर रही थी। Okay, so this is what our new floor looks like. अभी ये थोड़ा dirty है obviously क्योंकि काम चल रहा है। And ये वाला रूम हो गया है, ये hallway है। This is my room. I have never actually showed you guys my house before, but yeah, this is my room. This one. So इसमें अभी काम नहीं हुआ है। Then there's this hallway thing and then this is my mom's room and इसमें हो गया है, like all the tiles are done. But yeah, I just wanted to show you guys कि अभी थोड़ा complete होने के बाद ये कैसा लग रहा है। And yeah, rest everything is a mess like I was telling you all na. So this is the background that I currently work with, right? So these are all the pictures. So what I'm gonna do is I'm not gonna throw these pictures because I really want to keep them and मुझे ये pictures personally बहुत ज़्यादा पसंद है। So what I'm gonna do is I'm just gonna put them elsewhere. So ये जो wall है ना, मेरा जो bed वाला wall है, मैं इधर pictures लगाने का सोच रही हूँ। I'm gonna change all of these curtains also. I'm like super done with these curtains. Also, I am super excited for the surprise that I planned for my mom. Okay, so I got her a gift, like a pre-Diwali gift, and I am super excited. वो अभी तक आया नहीं है, जैसे आएगा I will talk to you guys about it. But yeah, it's gonna be so cute क्योंकि उनको दिवाली गिफ्ट्स की इतनी आदत नहीं है. So yeah, it's gonna be her pre-Diwali gift and I can't wait to surprise her. I'm pretty sure she's gonna love it. मेंटल चेकलिस्ट कर लेते हैं फटाफट। शॉपिंग करने जाना है, हॉल दिखाना है आपको कि मैंने क्या क्या खरीदा एंड देन मम्मी को सरप्राइज करना है। सो अभी शाम हो गई है, यू गाइस कैन टेल बाय द लाइटिंग। मैंने चेंज कर लिया है। आई एम वेयरिंग दिस वेलवेट स्वेटशर्ट फ्रॉम ज़ारा। आई विल डू अ ज़ारा हॉल। बहुत टाइम हो गया ज़ारा का हॉल नहीं किया एंड आई हैव सो मच स्टफ दैट आई बॉट ऑफ लेट, सो आई डू 1 हॉल। मुझे अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि मेरे रूम में अभी तक टाइल्स नहीं लगी है, वो लगेंगी, फिर मैं अपना पूरा बैकग्राउंड करूँगी एंड फिर मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी। सो या आई एम गोना हैव अ वेरी स्ट्रेसफुल वीक बट इट विल बी वर्थ इट। वेस्ट साइड मैं आ गई हूँ। यहाँ पे लिटरली कोई भी नहीं है। आश एंड आई आर द ओनली कंज्यूमर्स यहाँ पे।
एमलेसली घूम रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या ख़रीदूँ। एंड आई नीड अ स्टूल। मैंने वो वास रख दिया और प्लांट भी नहीं लिया। आई डोंट नो व्हाट टू बाय। ये सारे रियल है। वाओ। हाँ, एंड देन यू हैव ऑल ऑफ दीस। ओह, चेरी ब्लॉसम भी है। शुड आई टेक चेरी ब्लॉसम? बगो शिफ्टा, ये भी फेक है। हेलो, आई एम बैक फ्रॉम द मॉल एंड अभी मैंने एक टेम्प्रेरी सेटअप कर रखा है सो दैट आई कैन फिल्म एंड शो यू गाइस व्हाट ऑल आई गॉट। बट उससे पहले आई डिसाइडेड कि मैं अपनी मम्मी को उनका सरप्राइज गिफ्ट दूंगी बिकॉज अभी रात हो गई है। सो आई जस्ट वांटेड टू रेस्ट आफ्टर दिस एंड आई हैव हर बिग पैकेज राइट हियर दैट आई एम गोना शो यू गाइस। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस एंड आई होप कि उनको भी बहुत पसंद आए। सो फॉर माई मॉम्स प्री दिवाली गिफ्ट आई गॉट हर अ ह्यूज हैम्पर बाय दिस ब्रांड कॉल्ड कपिवा। सो दिस इज व्हाट द हैम्पर looks like. It is humongous and it is super heavy. So this is called the Lavanya Modern Ayurveda for Self-Care Kit. So basically it has a lot of cool products. मैं अभी आपको अच्छे से सारा दिखाऊंगी. Like I said, it's a huge hamper. बहुत भारी है. Okay you guys, so this is my mom's gift. This is by the brand Kapiva and this is called the Lavanya Modern Ayurveda for Self-Care. So basically this is a hamper and इसकी एक तो पैकेजिंग मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी. So this is the entire box and you guys can see इसका पैकेजिंग इतना ज़्यादा सुंदर है. It's very modern and it looks beautiful and ये इसका lid है. So once you open this you can see the entire range of products right here. So you have coconut oil यहाँ पे, you have biotin gummies I think. हाँ, ये वही है. एंड देन यहाँ पे रॉ घी है. ये मैं अभी खोलना नहीं चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी इसको अनबॉक्स करे. दिस इज़ द रॉ हनी. देन यू गेट द नीम जूस एंड दिस इज़ द एलोवेरा जूस. सो दिस इज़ एन ओवरलुक ऑफ द एंटायर पैकेजिंग एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी नाइस असॉर्टमेंट ऑफ रियली कूल थिंग्स. दिस ऑल्सो हैज़ अ सेल्फ केयर बिंगो एंड आई थिंक कि ये इतना स्मार्ट आइडिया है. बेसिकली इट्स अ वेरी गुड सेल्फ केयर पैकेज एंड दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल गिफ्टिंग ऑप्शंस, राइट? बिकॉज यूजुअली दिवाली is the time to just eat a lot of unhealthy food and sweets and all of that. So personally someone like me जिसको sweets नहीं पसंद या फिर जो हमारे पेरेंट्स हैं अगर किसी को डायबिटीज़ है या फिर जो स्वीट्स वगैरह इन जनरल पसंद नहीं करते एंड उनको थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल पसंद है, आई थिंक दिस इज सच अ गुड सेल्फ केयर पैकेज. दीज प्रोडक्ट्स आर क्यूरेटेड टू नर्चर योर स्किन एंड योर हेयर एंड योर ओवरऑल वेलनेस. माई मॉम राइट, शी डजंट वेयर अ लॉट ऑफ मेकअप एंड ऑल ऑफ दैट. उनको इतना आउटर ब्यूटी में ना इंटरेस्ट नहीं है. वो बहुत ही सिंपल पर्सन है. सो पैकेज like this is a perfect gift for her because वो ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकती है एंड इसमें जो नीम जूस है, एलोवेरा जूस है, रॉ हनी है, बायोटिन है एंड दैट विल ऑटोमेटिकली मेक हर स्किन गुड, हर हेयर गुड. सो दिस इज जस्ट बेसिकली अ वेलनेस पैकेज बट इट्स लाइक योर मॉडर्न वेलनेस पैकेज. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक दिस हैम्पर टू माई मॉम. शी इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग इट. वो एक्चुअली बिग बॉस देख रही है आई थिंक. सो या, आई एम जस्ट गोना गिव इट टू हर एंड आई होप दैट शी लाइक्स इट. आई एम प्रीटी श्योर शी विल लाइक इट बिकॉज शी लव्स गुड पैकेजिंग एंड उनको ऐसे प्रीमियम सेल्फ केयर टाइप के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है. वो बहुत इंडल्ज करती रहती है इन सब चीज़ों में. ओके, आइज क्लोजर. हाँ जी अम्मी. ओके, नाउ ओपन. My God. Wow. These are basically Ayurvedic products but these are curated specifically for your self care. Aloe vera juice. Neem juice. Neem juice. My God, there's so many. This is coconut oil. A2 to আমাকে সবচেয়ে বেস্ট লেগেছে কিন্তু. What else? তোমার you will It's see. a huge box. Oh wow. Ghee. Oh my God. And this is cow ghee. I was planning to, just have this. मम्मी को Cow ghee. घी Oh बहुत my पसंद है. God. And cow ghee is very, very pure. And it's very good for your health. Very good, very good. Cow ghee is the most, healthy ghee. She's very happy इतना बड़ा डब्बा लेके. Wow, very good. This is your pure raw honey. Yeah, very good. It's not processed or wrong type का ना. We'll open it. So I was telling my mom about the box and कैसे ये सारे जो products है वो Ayurvedic, modern Ayurvedic products है. You guys saw her reaction. She just totally I love loved all it. these products. Aloe vera gel, aloe vera juice,
and neem juice is also equally good for my health. So basically we focus so much on our outer beauty ना, but like फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि यू डोंट अप्लाई मेकअप, तुम या तो साजो गुजो ना, सो फॉर यू योर इंटरनल थिंग मैटर्स मोर एंड यू ऑलवेज वांटेड टू लाइक यू ऑलवेज इन्वेस्ट इन दैट मोर देन लाइक बाइंग मेकअप प्रोडक्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वाज जस्ट चेकिंग ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड मेरी मम्मी ने मेंशन किया कि इसमें एलोवेरा जूस में विटामिन सी भी है. सो आजकल के टाइम के लिए तो विटामिन सी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव एलोवेरा जेल, सबसे बेस्ट है. एंड जितनी भी एक्ने प्रोन स्किन है उनके लिए तो प्योर एलोवेरा जेल is a must. It is such a boon for your skin. Then you have कोकोनट ऑयल. ना कोकोनट ऑयल के बारे में तो कितना ही बोलो कम है, बिकॉज कोकोनट ऑयल तो सभी बहुत ज्यादा यूज करते हैं. We have been brought up, हम लोग इसी को यूज करते हुए ज्यादा करते थे. आप पहले बॉडी पे भी लगाते थे ना? बॉडी पे भी लगाते थे, हर जगह, स्पेशली बालों के लिए तो इट्स वेरी गुड. So I was reading about the cow ghee and it says कि it's very good for your joint pains and also for your digestion. Oh my god, and I do have joint pains. My god. And organic cow ghee is very good क्योंकि इसके अंदर कोई मिलावट केमिकल्स नहीं होते, केमिकल फ्री होता है. So this is absolutely pure ghee. Yay, thank you. क्या बनाओगी अब ये बताओ. So all of these products are a win-win. Are you happy? I'm super happy. Thank you, beta. I would highly recommend you guys to check out Kapiva and the Lavanya hamper as a Diwali gift. I think this is such a win-win, especially आजकल के टाइम में कोविड वगैरह चल रहा है and a lot of people are refraining from sweets and all of that. I think this is such a unique and different kind of concept. You know, सभी देते रहते हैं मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, ये सब तो चलता ही रहता है, बट एक आप सेल्फ केयर प्रीमियम पैकेज दो किसी को, सो आई थिंक कि वो एक इवन बेटर गिफ्ट बन जाता है. Kapiva has a huge range of health and wellness products on their website. मैं उनका वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दूंगी एंड इफ यू वांट टू चेक आउट दिस हैम्पर, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. जस्ट गो चेक इट आउट, सी इफ यू लाइक एनीथिंग एंड या लेट मी नो इफ यू गाइज परचेज दिस. ओके यू गाइज, आई एम सो टायर्ड, मुझे बस अब सोना है, बट आई वॉन्ट टू शो यू गाइज वॉट ऑल आई गॉट. सो आई वेंट टू स्पेसिफिकली लुक फॉर अ प्लांटर, बट मुझे इतने ऑप्शंस नहीं मिले वेबसाइट में लाइक यू गाइज सॉ. सो दिस इज द पॉट दैट आई गॉट. सो दिस इज मेटल का and it's pretty solid and why I liked it is because this is next to black. मैंने ओरिजिनली सोचा था कि मैं गोल्ड या रोज गोल्ड लूँगी, बट देन आई थॉट एवरीवन हैज़ दोज एंड उससे ज़्यादा मेरी पर्सनैलिटी इसमें शाइन करेगी एंड आई थिंक इट विल लुक वेरी क्यूट मेरे बैकग्राउंड में. ओके, सो टू गो विद दिस द प्लांट आई गॉट इज दिस. आई थिंक दिस इज कॉल्ड द चाइनीज फ्लावर, चाइनीज लीफ समथिंग. इससे निकाल के भी लगा सकते हो, बट मैं इसको ऐसे ही ना बैकग्राउंड में डाल दूंगी. आई थिंक इट विल लुक सो क्यूट एंड वंस इट ओपन्स अप एंड ऑल इट विल लुक वेरी नाइस एंड हो सकता है मैं इसके अराउंड लाइट्स वगैरह लगा दूँ. ओके, नेक्स्ट आई वाज लाइक आई गॉट द प्लांट एंड पॉट, बट मैं इसको रखूंगी कहाँ, क्योंकि मेरे पास स्टूल नहीं है. मैं तो चेयर पे बैठ के फिल्म करती थी राइट अगेंस्ट द वॉल, सो आई डोंट हैव ऑल ऑफ दिस. सो मुझे एक स्टूल भी खरीदना पड़ा एंड स्टूल्स, oh my god, why are stools so expensive? 3,000-4,000 rupees के stools. I was just so shocked. I was like, it's a stool, why are you so expensive? And I went to home center and वहाँ पे मुझे एक स्टूल पसंद आया जो सेल पे 2000 का था, but it was on sale because it is damaged. Then I went to 99 store, जो $99 स्टोर है, एंड वहाँ से मैंने दो चीज़ें ली. मुझे वहाँ पे एक बहुत ही क्यूट स्टूल मिला एंड देन आई ऑल्सो गॉट अ लैम्प. सो दिस इज द लैम्प, दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. आई डोंट नो इसको क्या शेप बोलते हैं, डायमंड शेप, एंड इसके अंदर बल्ब लगा हुआ है. मैंने इसको ट्राई किया था, सो ऐसे कोई बहुत लाइट तो आ नहीं रही थी, बट आई गेस ये अच्छा लगेगा. मैं अपने वैनिटी या कहीं पे रख दूंगी तो क्यूट लगेगा. एंड ये रोज गोल्ड कलर है. यू गाइस नो आई लाइक रोज गोल्ड, तो मुझे गोल्ड से ज़्यादा रोज गोल्ड पसंद है एंड मुझे सिल्वर सबसे कम पसंद है. सो दैट इज़ वाई आई गॉट दिस रोज गोल्ड वन. उसमें ना एक दो और शेप्स थे बट वो अगली थे एंड यही बेस्ट था, तो मैंने यही लिया. ओके, देन आई गॉट दिस स्टूल यू गाइस. सो दिस इज द स्टूल. मम्मा की बोले टोट स्टूल, मम्मा टोट स्टूल बोले. They're not like that, toadstool, they're a mushroom type. ओके, सो माई मॉम इज सेइंग इसको टोट स्टूल, मशरूम स्टूल कुछ ऐसा बोलते हैं. सो ये ना वेलवेट कुशन है एंड इसका क्वालिटी इतना अच्छा था एंड इसके नीचे वुड की ये लेग्स है, बहुत स्टर्डी है ये. लाइक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट. मैं तो इस पर बैठी हुई हूँ, सो मेरा वेट तो ईजिली ले लिया इसने. ये बहुत स्टर्डी है एंड आई गॉट इट फॉर ओनली 999, सो 1000 रुपीज. आई थिंक इट इज़ वेरी गुड क्योंकि ऐसे स्टूल्स ऑनलाइन भी महंगे हैं, लाइक 1500-1600 रुपीज़. एंड आई वेंट टू बाथ एंड बॉडी वर्क्स, सो
I got a candle holder. This is a fox. Can you see? It's a chamkila fox, but candle holder है. जब मैंने इसको देखा, I was like, what is this? Like, I was super surprised कि इतना सुंदर and unique. मतलब candle holders मैंने normal type के देखे, मैंने ऐसा type का कुछ नहीं देखा. And I thought कि मैं बस background में ऐसे रख भी दूंगी, ये कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा. I just got it because it looks so pretty. This one is originally for 2700. Okay, so I was just like, okay, fine, whatever. I will invest in this piece. And when I went to the billing counter, उन्होंने मेरा जैसे बिल किया, they were like, oh my god, इस पे off है. And I was like, कितना off है? And then they gave me a 50% off. I am so happy. And you know what, मैं कभी इतना lucky नहीं होती कि मुझे ऐसी सुंदर चीज़ों पे इतना बड़ा डिस्काउंट मिल जाए. So when he told me इस पे 50% off है, I was like, this is meant to be. This fox is meant to be mine. So yeah, this is the last thing that I got. So that is it. This is my Diwali decor haul and renovation के बाद मैं ये सब चीज़ों से ही एक अच्छा बैकग्राउंड बनाऊंगी जो आपको मेरे दिवाली के वीडियोस में दिखेगा very soon. I cannot wait to show you guys and I am ready to say goodbye to this. मुझे बहुत emotional feel हो रहा है. I'm not gonna lie because I have been filming against my pictures for like about a year, so it's gonna be hard to say goodbye to this, but I'm just gonna move it to the other wall because I really personally like these pictures. एंड आई नो अभी के लिए आप लोग बोर हो गए हो, सो मैं इसको रिमूव कर दूंगी, बट परमानेंटली हम इनको बाय नहीं बोलेंगे. या आई एम गोना प्ले विद अदर बैकग्राउंड, सी व्हाट यू गाइस लाइक. आई होप कि आप लोगों को ये सब पसंद आएगा. मैं ये सारी चेंजेस आपके लिए ही कर रही हूँ बिकॉज ऑनेस्टली इफ इट वर जस्ट अप टू मी आई वुड ओनली फिल्म अगेंस्ट अ वाइट वॉल. जैसे मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में वाइट वॉल के अगेंस्ट फिल्म करती थी ना. सो या ऑल ऑफ दिस इज समथिंग दैट यू गाइस हैव आस्क्ड फॉर, सो आई एम मेकिंग दोज चेंजेस नाउ एंड आई होप कि आप लोगों को न्यू बैकग्राउंड्स पसंद आएंगे. मुझे ज़रूर बताना एंड मुझे बताना कि मैंने अभी ये जो लिया उसमें से आपको क्या अच्छा लगा. सो या आई जस्ट फील बेटर, यू नो. आई एम गोना व्लॉग अगेन सून एंड एक जो प्रॉपर रेनोवेशन वीडियो होगा वो भी ज़रूर आएगा जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, वो सब मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. And yeah, thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe before you leave and I will see you guys very soon for Diwali week. Bye bye.